So hello everyone, good evening. Welcome to EduTap. I am Surbhi and this is Perspective 360 Degree, your one-stop solution for current affairs, descriptive writing and answer writing evaluation. So first of all, let me tell you that this is day 22 of Perspective 360 Degree. I am very sure that this initiative is helping you out ace your answer writing skills. What we do is we discuss a current affairs topic which has high probability of being asked in your phase 2 part of examination, and I know a lot of students out of you, आपके जैसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में स्ट्रगल करते हैं. सो बेसिकली एड्यूटैप का फ्री इनिशिएटिव आपको वहाँ पर हेल्प करने के लिए. सो वी स्टडी करंट अफेयर्स टॉपिक, वी एनालाइज देम एंड वी एनालाइज देम थ्रू अ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट, जैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में एक्चुअली पूछे जाते हैं. तो उसके बाद यू हैव 48 hours to share your answers with us in the comment section under this YouTube video, and we evaluate that answer for free. So welcome, good evening. If my audio is clear, too late to ask, but yes, if the audio and video both are clear, kindly let me know in the chat section. Just send a thumbs up so that I know that everything is clear here. Hello Ganga, hello Angel, hello Dinesh. Can you hear me properly? I hope there is no break in the sound and the screen is clear to you. Kindly send a thumbs up or say that the voice is clear, and then we will quickly begin. Also, our sessions have been extended to like 40 minutes or so, 35 to 40 minutes. We'll try to wind up these sessions in 25 minutes if possible, so that I'll try, so that you don't have to spend a lot of time watching these sessions. All right, Dinesh, thank you. Ananya, thank you. Harshit, all right, thank you all of you, and welcome back. Many of you are regular viewers of Perspective 360 Degree, so that gives us immense pleasure. The topic for today is startups in India, and contrarily, startups in India, are startups in India shutting down? So is there a problem with the startup ecosystem in India? Of course. If you remember this year's RBI Grade B Phase 2 2023 exam, it specifically asked you questions about problems that startups face in Tier 2 and Tier 3 cities, means which are not mega cities. So today our topic will be focusing on that. Just to tell you, see, we always talk about that India does not have jobs. India does not have a manufacturing industry which is solid. India will be turning its demographic dividend into a demographic disaster because there is no industrial revolution happening in India. Industries है ही नहीं, manufacturing है ही नहीं इंडिया में, इसलिए लोगों के पास jobs नहीं है. So either we are all preparing for government jobs, या काफ़ी ज़्यादा डिग्रीज अक्वायर करके भी बहुत लोग अनएम्प्लॉयड हैं, या वो दूसरी कंट्रीज में मूव करना चाहते हैं, स्पेशली द यंगस्टर्स. ऑलराइट, तो यहाँ पे जो स्टार्टअप्स का स्टार्टअप इकोसिस्टम की जब बात करते हैं, बेसिकली इट इज़ मेंट टू प्रोवाइड सोल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम्स दैट इंडिया इज फेसिंग, स्पेशली at this age when India is one of the youngest country in the entire world. तो startups के साथ अगर कोई problem है, so obviously that becomes important not just for the economy but for our exam as well. ठीक है, so first of all let's look at what is the news. So it says मिंट की एक न्यूज़ है 30th अक्टूबर की, जस्ट वन डे बैक, दैट विमेन लेड स्टार्टअप्स राइज टू 18% इन पास्ट 5 years. सो हमारे सिलेबस का पार्ट है जेंडर इक्वालिटी और जेंडर इश्यूज. सो दैट्स वाई हर एक एस्पेक्ट में जो भी इशू चल रहा है उसमें विमेन का पार्टिसिपेशन देखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. देन इंडियन स्टार्टअप्स में जनरेट 2 million jobs for women by 2030. दैट इज अगेन अ रिपोर्ट इन बिजनेस लाइन दैट वाज अगेन covered on October 30, 2023. ठीक है, then there is UP has allocated some 1,000 crore to start a fund to support innovative business ventures. फिर आपका Skyroot Aerospace है, one of the favorite startups of our country at this time, जो कि जिन्होंने न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ रजिस्टर किया है टू लॉन्च वेंचर्स इनटू स्पेस, अपने रॉकेट्स बनाने के लिए आगे सैटेलाइट्स ताकि हम ड्रॉप कर सकें स्पेस में. सो दिस इज स्पेस इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही है पिछले 1 साल में रिगार्डिंग स्टार्टअप्स इन द कंट्री. मोर देन 100 स्टार्टअप्स इन द स्पेस सेक्टर हैव बीन रजिस्टर्ड. इस पर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, दिस इज जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन. हमारा जो आज का डिस्कशन होने वाला है, दिस विल फोकस अराउंड अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन गिवन टू अस इन EPW एंगेज.
It is known as the mapping the startup ecosystem in India, which was written by Mr. Anish Tiwari. तो ये डेट है और ये जो EPW का एडिशन है अब EPW की वेबसाइट पे ये फ्रीली अवेलेबल है. So you can look at the volume and issue number if you want to read out this article for yourself. So we've jotted down, we've collected points in a 360-degree manner so that you don't have to go here and there for more information. तो इसी रिगार्डिंग पहले देख लेते हैं why is startups in India as a topic important for you. Startups in India आपको कहीं पर भी स्पेसिफिकली अपने सिलेबस में नहीं मिलेगा. NABARD, RBI, SEBI तो क्या in UPSC also you will not find it as a separate topic. But what do we mean by startups? जो कि छोटे बिजनेसेस होते हैं, जो छोटी कंपनीज होती है जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है, अपना बिजनेस लॉन्च किया है, कुछ इनोवेटिव आइडिया दिया है. सो दीज आर बेसिकली नोन एज स्टार्टअप्स. तो उनका वैल्यूएशन के हिसाब से उनको किस टाइप का वो स्टार्टअप है, कितना बड़ा बिजनेस है, कितनी बड़ी कंपनी है, उस टाइप से उनकी कैटेगराइजेशन की जाती है. सो बेसिकली दिस इज पार्ट ऑफ इंडस्ट्री ओनली और ये आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में हेल्प करता है. सो वी सी देर आर 2 topics in your paper 2 ESI where this topic finds relation with, that is poverty alleviation and employment generation in India, and the second one is industrial performance. ठीक है, तो ये आपके 2 टॉपिक्स हैं जहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है. एंड सिमिलरली फॉर RBI Grade B अगेन द सेम टॉपिक्स. आपका जो सिलेबस है दोनों एग्जाम्स का काफ़ी सिमिलर है. सो हियर इट फाइंड्स रेलेवेंस. देन इन SEBI Grade A एग्जाम, ऑब्वियसली फॉर इंग्लिश राइटिंग स्किल्स यू माइट बी आस्क्ड एन essay स्पेसिफिकली ऑन स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द कंट्री, या जो आपका इकोनॉमी में है इनडायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है बिजनेस साइकिल्स में एंड एनीवेयर वेरेवर देर आर कॉन्सेप्ट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन्वॉल्व. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी व्हाट इज द एक्सपेक्टेड क्वेश्चन. फिर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझाया जाएगा एंड देन आई विल टीच यू हाउ टू राइट अ गुड आंसर रिगार्डिंग दैट, ताकि आप पूरी की तरह 360 डिग्री वे में प्रिपेयर हो जाएं फॉर योर एग्जाम फॉर दिस टॉपिक रिगार्डिंग द एग्जाम, स्पेशली द स्टूडेंट्स हु आर सिटिंग फॉर NABARD Grade A phase 2 एग्जामिनेशन अ फ्यू डेज लेटर. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स लुक एट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन. तो पहली बात आपसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में फर्स्ट थिंग कैन बी आस्क्ड व्हाट आर द एडवांटेजेस और बेनिफिट्स ऑफ स्टार्टअप्स इन इंडिया. हम स्टार्टअप इंडिया या स्टार्टअप्स की क्यों इतनी बात कर रहे हैं, हर कोई बात कर रहा है स्टार्टअप्स की, वाई इज इट, सो व्हाट आर द एडवांटेजेस. सेकेंडली, अगर हम इतना बात कर रहे हैं एंड इफ दीज आर सो इंपॉर्टेंट एंड व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद स्टार्टअप्स इन इंडिया जो उनको इतना ग्रो नहीं करने दे रहे. सो रीडिंग दिस क्वेश्चन, व्हाट आर द एडवांटेजेस एसोसिएटेड विद स्टार्टअप्स इन इंडिया, एग्जामिन सम ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद देम and answer in 400 more words for 10 marks. Kindly keep the word limit in your mind. भूलिएगा नहीं, don't cross the word limit. And this is the answer blueprint. I share this every day with you because this is the format of answer you have to follow. आपने ऐसे ही format में answer लिखना है तभी अच्छे marks मिलेंगे. It is divided into 3 parts, that is introduction, main body and conclusion. Main body से हमें maximum marks मिलते हैं, but with the help of introduction the examiner is obviously able to delve into our personality कि इंसान जो पेपर लिख रहा है कितना mature है. So we focus a lot on introduction and then on conclusion as well. यहाँ से हमें अपनी creativity पता लगती है हमारे examiner को. So I'll teach you how to write a good introduction and conclusion for this answer. For main body we will be covering this entire topic. So first of all let's break this question down. पहले break down करते हैं how will we write this answer and then I will teach you this topic. So introduction में first of all have a conversation with the examiner regarding startups in India. Don't start to define startups कि startup ये होते हैं and important क्यों है India के लिए. Don't talk about that because that is an explicit question. In the introduction give some data that general information about startups in India और India का जो startup ecosystem है. If you have heard about any global rankings or global rankings आई हैं regarding Indian startup ecosystem, so we'll be using that data to emphasize that yes, India में जो startup ecosystem का phenomena है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है. It is increasing at a very fast pace. Then moving on to body part 1, we'll talk straight away about the advantages. Then in the body part 2, we'll come to the major problems associated with startups and then in the conclusion यहाँ पे हमने problems की बात की है. Whenever you are asked a problem in the exam, don't leave it just there. The examiner is also indirectly expecting you to write some solutions. अब आपसे इतनी बड़ी problem का solution आपसे नहीं मांगा जा रहा है. Basically solutions have to be given with what you have read, what the government has done, what the government can do. तो वो solutions आप comma करके commas की help से अपने way forward में आप लिख सकते हैं. Alright, so now we'll move on to the introduction part, but I'm getting a lot of messages in the chat section, so let me just go through them and then let's start this discussion.
Good evening, Mohit, Kaveri, Gangaram, Arpita. It is not notified. All right, Arpita, we'll see to that. Yes, the next third largest. That is right. So, okay, thankfully, no doubts at this stage. So, basically, when you have to give the general information about startups in India, पहली चीज आपको बहुत clear होना चाहिए. Startup means a company or a business is just starting. और कुछ ऐसा वो start कर रहे हैं जो कि एक बहुत ही innovative idea है. Something that is very innovative. Probably जैसे school teaching होती है. Probably somebody is capable enough to provide mathematics lectures with the help of games. तो वो क्या करते हैं, अपनी एक छोटी कंपनी बना लेते हैं where they are themselves doing a lot of things and they hire a few people ताकि वैसे solutions लोगों को provide किए जा सकें. And the more they sell their product, the increase in business happens over time. तो वो उतना बड़ा वो एक कंपनी, एक full fledged कंपनी में with time convert हो जाते हैं. So startups, why are they important for us? Because obviously इनोवेशन इंडिया में कहीं पर भी आ सकता है. यू आर सिटिंग एट योर होम और एट योर वर्क प्लेस. यू कैन ऑल्सो थिंक अबाउट सम आइडिया कि यार ये जो दरवाजा है, दिस डोर दैट इज यूज टू ओपन दी एंट्रेंस और टू क्लोज इट, इट कैन बी ऑटोमेटेड. और ऑटोमेटेड डोर्स का आपके पास आइडिया आ सकता है इंस्टेड ऑफ having a human watchman there. तो आपके पास कोई भी आइडिया आ सकता है that can lead to innovation and you can, if you have some amount of funding available, ठीक है, चाहे वो if you have some amount of official funding available with you, probably आप अपने आइडिया को एक बहुत ही बड़े बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं over a span of time. So when you actually launch your business, to launch your innovative idea, what you will do, you will employ people. तो लोग जो आसपास के होंगे आप उनको employment देंगे. If employment is created, it will benefit the economy. And most importantly, urbanization and migration is part of our syllabus. And as a country, we do not prefer migration a lot. क्योंकि हमें पता है इंडिया में जो migration है, that is forced migration because of lack of economic opportunities. तो अगर आप बड़ी cities की बात करें, दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है. रिसोर्सेज आर very very pressured due to migration in these big cities. So what we want is that startups or small companies, small businesses should be coming up in tier 2, tier 3 cities as well. Rural areas में भी आने चाहिए ताकि लोगों को employment opportunities मिल सकें. All right, and economic growth can happen from all parts of the country and migration can be stopped. So first of all, let's write general information about startups. Definition नहीं, but let's say I have some pictures for you so that you don't get confused here कि यूनिकॉर्न क्या होता है, डेकाकॉर्न क्या होता है. सो बेसिकली जो भी स्टार्टअप लॉन्च किया गया है उसकी कोई वैल्यूएशन होती है. A valuation is given to the company, how much profits they are making, how much investment has been done. उसके basis पर valuation होती है company की. If the valuation is almost greater than $1 million, यानी कि $10 lakh से ज़्यादा की बड़ी वो कंपनी है, then it is known as minicorn. If it is around $1 billion, then it is known as unicorn. And unicorn, जो कि बहुत ही important term है, it has been used in economic survey a lot of times. Unicorn is basically a startup that is greater than, जिसका जो valuation है, it is greater than $1 billion. So you don't have to remember it exactly, you don't have to remember all the terms, but whenever we use this term in our answer, kindly do not get confused. ये सिर्फ nomenclature है. So there are some list of unicorn startups in India. India क्या चाहता है? In fact, सारी countries चाहती हैं unicorns बहुत ज़्यादा हो हमारी country में, because these are the startups which have become big businesses, यानी कि job और employment और economic growth बहुत ज़्यादा दे रहे हैं. So look at if some of you can recognize some of these. Razorpay है, it has eased our online shopping and online transactions. Byju's, I'm sure you're aware of it. Grow, for those of you who are investing in stock markets, you are aware of it. Oyo also, Oyo was an एक Indian idea था, Indian person का idea था. Later it was taken over by a foreign firm. अर्बन कंपनी है, ड्रीम 11 है, आजकल क्रिकेट मैचेस चल रहे हैं, सो वेरी मच रिलेटेबल. क्रेड है, एंड देन जस्ट बिग बास्केट है, फ्लिपकार्ट है, जोमेटो, ऑल दीज थिंग्स. सो आई एम श्योर दैट यू नो व्हाट दीज कंपनीज आर. ये बड़ी कंपनीज हैं जो कि एक स्टार्टअप लेवल से शुरू हुई थी. नाउ दीज आर यूनिकॉर्न्स ऑफ इंडिया. ऑल राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स राइट आवर इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में हम एक जनरल बातचीत करेंगे स्टार्टअप्स के बारे में. सो बेसिकली जस्ट से दैट ओवर द पास्ट डिकेड स्टार्टअप्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं इंडिया में, एंड व्हाई दिस हैज़ हैपेंड.
एनवायरनमेंट बिकॉज बहुत ज़्यादा इनोवेशन आ रही है एंड प्रेजेंस ऑफ यूथ इज हाई. सो ओवर द पास्ट डिकेड इंडिया हैज़ विटनेस्ड exponential growth in entrepreneurial activity, transforming it to one of the leading startup ecosystems of the world. तो जब इतने ज़्यादा startups launch होने लगे तो government का भी ध्यान startups पे गया that this is the biggest opportunity that we have for our country. We want to have more jobs and presence of manufacturing sector in the country. तो government ने भी इसके ऊपर focus करना शुरू किया. So its potential to contribute to Indian economy has attracted the attention of policy makers, which in turn has led to crucial policy interventions. And what is the policy with regards to startups? The Startup India Initiative, जो कि 2016 में launch किया गया था. We'll read about it in a while. And now including some data. थोड़ा अपना introduction को fancy और थोड़ा सा strong रखेंगे हम with the help of some data. So the Indian startup ecosystem is ranked 20th in the world according to Global Startup Ecosystem Index ranking. All right, and there are 3 cities जहाँ पर सबसे ज़्यादा startups हमारे clustered हैं, which are cities of Mumbai, Delhi and Bengaluru. So these ये जो 3 cities हैं top 20 cities of the world in terms of startup ecosystem में ये rank की गई हैं. So that is a proud moment for India. And it has also been said that India is the third largest startup ecosystem in the world behind China and US. तो US और China top पर है, उसके बाद third number पे India है. Kindly remember this ranking and data, especially अगर आपका phase 2 exam आ रहा है. And in the last line we'll write about Startup India Initiative to strengthen the startup ecosystem further. Government of India launched the Startup India Initiative in 2016. जो startup culture को catalyze करे, policy support दे, and एक inclusive ecosystem for innovation and entrepreneurship develop kare. So look at this introduction. We just started with talking about the growth of startups in India. Then we said because of this growth, it has taken the attention of policy makers, and उसकी वजह से क्या हुआ है, rankings of startups in India or India's ranking in terms of startup ecosystem, they have improved. Not just India's ranking, our cities ranking also, and now India is third largest. फिर हमने बहुत ही lightly we've talked about Startup India Initiative in just one line. ठीक है, यहाँ पे हमें पूरा स्कीम जानना ज़रूरी नहीं है, what are the features, but we've talked about this in one line. So now let's move on to the let's delve deeper section. And in the let's delve deeper section, what we do, we study the body part of the answer, यानी कि advantages क्या है startup के. Advantages I think very much clear. What are the advantages associated with startups in India? Employment, innovation, आपके पास फॉरेन कैपिटल जनरेट हो सकता है, एंड फॉस्टरिंग बूस्ट टू इकोनॉमी मिल सकता है इन सब से. सो हाउ डज इट जनरेट एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन कैसे होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सटैंशियल नंबर ऑफ जॉब्स. इसको एक्सप्लेन कीजिए दैट स्टार्टअप्स हैव द पोटेंशियल टू क्रिएट सब्सटैंशियल नंबर ऑफ जॉब्स. एक अगर छोटा स्टार्टअप भी है, ऑब्वियसली दे विल बी हायरिंग पीपल अराउंड फॉर बेसिक सर्विसेज टू ऑपरेट देयर कंप्यूटर्स, टू कम्युनिकेट, टेलीकॉलर्स दे विल बी हायरिंग. सब काम एक जो स्टार्टअप लॉन्च कर रहा है वो इंसान खुद नहीं कर पाएगा. सो ही शी विल बी एम्प्लॉइंग पीपल फ्रॉम ऑल स्किल रेंजेस, अनस्किल्ड से लेकर हाईली एडवांस स्किल तक के लोगों को उसको हायर करना पड़ेगा. एंड हेंस दीज पीपल in their hometowns will be able to get high number of jobs or the jobs of their choice. तो इससे हम लोगों को poverty reduction में help मिलता है, poverty alleviation में help मिलता है. So employment creation, and this is especially significant for developing countries like India where unemployment situation is very very bad. Unemployment rates बहुत ज़्यादा prevalent हैं. Then new investments occur because new investments क्या होती है? Now let's say I talked about Razorpay. One of these startups was Razorpay here. So now what Razorpay is doing, आप क्या करते थे, पहले आप ऑनलाइन शॉपिंग करते थे, you could shop only from the websites which were actually helping you shop online. ठीक है, तो वो ऑनलाइन पेमेंट होता था, कैश ऑन डिलीवरी होता था. विद द हेल्प ऑफ Razorpay ऑनलाइन पेमेंट्स इन्होंने मीडिएट कर दिया है. सो ये मीडिएटर का काम करते हैं इन द एक्चुअल वेंडर एंड बिटवीन द कस्टमर. थ्रू आपके कई फॉर्म्स है वो भी Razorpay के थ्रू फिल किए जाते हैं ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स एंड ऑल दैट. ठीक है, क्रेड ने क्या किया है, आपकी जो क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड सर्विसेज हैं उसको आसान कर दिया. इट हैज़ मेड पेमेंट सिस्टम्स इजी. लुक एट Paytm, हाउ इट हैज़ रेवोल्यूशनाइज हाउ वी ऑपरेट इन द in an environment like India. आजकल जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं उनके पास भी Paytm होता है. सो ऑब्वियसली दे हैव ट्रांसफॉर्म्ड एन इकोसिस्टम. तो बेसिकली जब ये न्यू इन्वेस्टमेंट जनरेट करते हैं, बिकॉज काफ़ी सारी जो सर्विसेज हैं आउटसोर्स कर दी जाती हैं स्टार्टअप्स को, एंड हेंस
new investment can be generated. So established companies, they often outsource certain tasks to startup, allowing them to focus on their core competences, and this opens up opportunities for investment in the country. Then now boost to the economy. Obviously when people will be hired, they will be getting salaries, तो economy को boost होना ही है. So as locals are employed, locals का employment बहुत ही important है when we talk about startups, and they purchase goods and services. हमारा purchasing power जो purchasing power है, that increases because we have more disposable income because of the high employment opportunities. So money flows into the economy, leading to increased revenue for the government, यानी कि ज़्यादा लोग अब tax pay कर पाएंगे, and overall economic growth. Then don't forget to talk about migration. Startup से migration बहुत ज़्यादा control हुई है और भी ज़्यादा हो सकती है. Don't forget to talk about it. You will not find it anywhere, but do talk about it. Okay. Then fostering entrepreneurship and innovation. Innovation से क्या होता है? Look at United States of America. Look at China. Because of innovation, they're developing vaccines, mobile phones, gadgets, clothes, everything. So if that innovation ecosystem can be catered to, can be nurtured in India, which is actually happening with the help of startups, तो हम अपने products बना पाएंगे अपनी country में, and then we can sell off to other countries. So entrepreneurship or innovation का environment generate होता है. So basically these are some data that how Indian startups are contributing to India's 5 trillion economy goal, and they are becoming the backbone of Indian economy. Then startup ecosystem, it encourages entrepreneurship and fosters a culture of innovation, contributing to social capital and technological advancements. Also, I see a lot of you who are posting exactly the same explanation that is written on the PDF. Don't do that. वो भी कीजिए, अपनी तरफ से ऐड भी कीजिए जितना आपको समझ में आ रहा है उसके अकॉर्डिंग, मेक एडिशंस ऑल्सो. नाउ मूविंग ऑन टू बॉडी पार्ट 2, दैट इज मेजर प्रॉब्लम्स. अब प्रॉब्लम्स क्या है स्टार्टअप से एसोसिएटेड? द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज फंडिंग ऑफ स्टार्टअप्स. अगर एक कंपनी ने लंबे टाइम के लिए रन करना है, देन लेट्स से अ कंपनी इज लॉन्च टुडे, अ स्टार्टअप इज लॉन्च टुडे, तो वो पहले महीने से तो प्रॉफिट्स नहीं बनाने लग जाएंगे. इट विल टेक अ फ्यू मंथ्स और अ फ्यू ईयर्स टू मेक प्रॉफिट्स फॉर द पीपल टू लाइक देयर प्रोडक्ट एंड पीपल टू यूज दैट सर्विस और प्रोडक्ट. तो उतने टाइम में हाउ विल द इन्वेस्टर और हाउ विल द फाउंडर ऑफ स्टार्टअप सस्टेन हिज ओन एक्सपेंसेस, या अपनी कंपनी को रन कैसे करेंगे वो. सो फॉर दैट फंडिंग इज रिक्वायर्ड, कि कोई एंजल इन्वेस्टर आ जाए या गवर्नमेंट से फंडिंग मिल जाए या वेंचर कैपिटल फंड्स होते हैं, दैट यू नो somebody else funds his expenses and the startup for let's say a few months or a few years, ताकि वो जब तक mature हो सके, maturity वाली स्टेज में पहुंच सके जहाँ पे वो स्टार्टअप खुद के लिए प्रॉफिट जनरेट कर रहा है. सो फंडिंग का प्रॉब्लम है. देन यू हैव geographical concentration. We have seen that 83% of startups they should be located in smaller cities. बट ये 3 ही सिटीज़ में हैं, दिल्ली, मुंबई एंड बैंगलोर. तो बाकी सिटीज़ में एम्प्लॉयमेंट कौन दे रहा है? वी वॉन्ट मोर स्टार्टअप्स टू बी एस्टैब्लिश्ड इन Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज़. ये आपका स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव का वन ऑफ द पॉलिसी गोल भी है. ऑलराइट, देन देयर इज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन. विमेन लॉन्च जो स्टार्टअप्स हैं या जो विमेन लॉन्च स्टार्टअप्स को फंडिंग है वो बहुत ज़्यादा कम है. सो ऐसे वी हैव जॉटेड डाउन 6 मेजर प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद स्टार्टअप्स इन इंडिया. द फर्स्ट वन इज जोग्राफिक कॉन्सेंट्रेशन which is based in mega cities only. ऑल्सो इट हैज़ बीन नोटेड थ्रू डेटा कि जो छोटी सिटीज़ में स्टार्टअप्स होते हैं वो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज फॉर बेसिक सर्विसेज ऑल्सो दे आर हायरिंग अ लॉट ऑफ पीपल, वाइल द स्टार्टअप्स विच आर एक्चुअली इन बिगर सिटीज़, जो बड़ी सिटीज़ के स्टार्टअप्स होते हैं, दे डू नॉट प्रोवाइड एज मच एम्प्लॉयमेंट एज इन Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज़ आर प्रोवाइडेड, क्योंकि बड़ी जो सिटीज़ के स्टार्टअप्स हैं वो मोस्टली ऑटोमेटेड होते हैं. सो दे डू नॉट एम्प्लॉय इवन 500 पीपल, बट छोटी सिटीज़ के स्टार्टअप्स दे एम्प्लॉय मोर देन 500 पीपल इफ दे आर एट द maturity stage. So startup activity in India कहाँ पर concentrated है? Delhi, NCR, Bengaluru and Mumbai, and it limits opportunities क्योंकि ये migration को ही force कर रहा है for startups in other regions and creates an uneven distribution of resources. कि job चाहिए तो आपको इन्हीं cities में move करना पड़ेगा. Then स्टार्टअप क्लस्टर्स की बात की जाती है. दीज 3 cities are known as startup clusters of the country. So they said कि जो आपकी यूनिकॉर्न्स है, 75 यूनिकॉर्न्स हैं इंडिया में according to 2021 data, and out of these 75, 83%, that is 62 out of 75, 62 unicorns are based in these 3 clusters only, these 3 cities only. So that is मतलब इंडिया का ग्रोथ कहाँ हो रहा है? सिर्फ बड़ी सिटीज़ में ही हो रहा है. You'll have to leave your family, leave your homeland to get a good job or to be employed in a startup. तो ये जो चीज़ है इसको हम बदलना चाहते हैं. That is one of the major problems associated with startups in India. Then you have access to funding, that is problem, या इसको हम बोल सकते हैं lack of access to funding. ठीक है,
लैक ऑफ एक्सेस टू फंडिंग स्पेशली छोटी सिटीज़ में बहुत ही ज़्यादा है, या छोटे टाउन्स में बहुत ज़्यादा है. सो especially for those outside the main clusters. And what happens is lack of funding agar hoti, lack of funding is very much expressive in itself also, so it can hinder the growth and expansion of startups in the country. और ये जो फैक्ट है दैट कि जो स्टार्टअप्स छोटे एरियाज में होते हैं वो ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, ये आपने प्लीज़ मेंशन करना है अपने आंसर में. Now moving on to limited diversity in founding teams. Limited diversity क्या, women driven startups बहुत कम है. We have very few women who are founders of startups. एंड वेंचर कैपिटल फंड्स में भी जो विमेन का रोल है दैट इज़ वेरी वेरी लेस. और डाइवर्सिटी की बात अगर की जाए, देर आर जस्ट अ फ्यू इंस्टीट्यूट्स इन आर कंट्री. कुछ IIMs हैं, कुछ और बिजनेस स्कूल्स हैं लाइक ISB, विच आर एक्चुअली promoting a startup culture. IIT के लोग, IIM के लोग, only these are the people who are founders of startups. बाकी जो universities हैं, other universities and other B schools, they are not nurturing a startup ecosystem. तो अगर सिर्फ यही लोग which have been like very very good in studies, अगर यही लोग solutions provide कर रहे हैं through their startups, then we are missing out on a lot of innovation already. क्योंकि जो एक ground situation है वो सिर्फ एक IIT या IIM graduate नहीं समझ सकता. We need people or we need founders of startups coming from other institutes also. तो ये बहुत ज़्यादा limited diversity in terms of gender and the institute people are passing out from. ये हमने इसको हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है. सो देयर इज डोमिनेंस ऑफ फ्यू प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज व्हेन वी टॉक अबाउट स्टार्टअप फाउंडर्स इन फाउंडिंग टीम्स. देन देयर आर विमेन हु आर सेवियरली अंडर रिप्रेजेंटेड. सो इससे क्या होता है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव जो होते हैं वो लिमिट हो जाते हैं. विमेन इफ दे आर नॉट लॉन्चिंग स्टार्टअप्स तो वो विमेन फ्रेंडली प्रोडक्ट्स भी नहीं बनेंगे, एंड अप्रोचेस टू प्रॉब्लम सॉल्विंग वो भी बहुत ज़्यादा लिमिटेड होगा आपका. ऑल राइट, सो विमेन फाउंडर्स क्या है, ओनली 4% ऑफ टोटल फाउंडर्स हैं हमारी कंट्री में. मान लीजिए जब 75 यूनिकॉर्न्स है तो ओनली 44% आउट ऑफ द टोटल फाउंडर्स, 100% फाउंडर्स, दे आर जस्ट विमेन. ये जो आपको रेड सा दिख रहा है छोटा सा, दैट इज द नंबर ऑफ फाउंडर्स विच आर विमेन एक्चुअली. देन देर इज लैक ऑफ टैलेंट एंड सपोर्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर. वी हैव स्किल इंडिया मिशन गोइंग ऑन, बट वी डू हैव अ लॉट ऑफ अनस्किल्ड लेबर. तो क्या होता है, अगर किसी को टेक्निकल एक्सपर्टीज है, दे आर पेड वेरी हाईली, वाइल अदर्स हु आर नॉट a specialist or do not have technical expertise, उनको बहुत ही कम सैलरी मिलता है. There is lack of talent which startups can actually hire, तो उनको लोग ही नहीं मिलते अफोर्डेबल लेवल पर. एंड सपोर्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्री में नहीं है. वी हैव वेरी फ्यू कोवर्किंग स्पेसेस. कोवर्किंग स्पेसेस में आप रेंट कर सकते हैं 1 सीट या 10 सीट्स, एंड देन यू डोंट हैव टू नीड टू हैव अ सेपरेट ऑफिस. यू कैन गेट केबिन्स फॉर रेंट. ठीक है, तो काम करने के लिए ऐसा तो नहीं है कोई कंपनी लॉन्च हुआ है देन दे विल बी एबल टू रेंट एन एंटायर फ्लोर टू रन दैट स्टार्टअप और टू दैट कंपनी, और कंपनी या पूरा बिल्डिंग एकदम से खरीद लेंगे. दैट इज नॉट पॉसिबल. सो व्हाट वी वांट इज मोर कोवर्किंग स्पेसेस. ठीक है, एंड मोर इंक्यूबेटर सेंटर्स जहाँ पे सब लोग इंटरैक्ट कर सके, बात कर सके. टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज एंड मेंटरशिप प्रोग्राम्स इन ऑल काइंड्स ऑफ एजुकेशनल सेटअप्स or networking opportunities. LinkedIn is a good platform for networking opportunities, but we want more networking in the country so that everybody grows. You and your friend or your competitor, everybody grows in the system. Then there is acquisition driven exit. Acquisition driven exits का क्या मतलब? When a startup has operated for let's say a few number of years, तो startups को realize हो जाता है that probably will not be able to make profits in the long run. Or let's say even if they are able to make profits, उनको funding नहीं मिल रहा है जो उनको आगे operate करने के लिए चाहिए. So what they prefer is they want कि कोई मेरी कंपनी या मेरा स्टार्टअप acquire कर ले. Let's say there is a foreign firm and then they send letters or they request the foreign firms to acquire their companies or their startups. या अगर उनका कोई बहुत ही innovative idea होता है, for example ओयो रूम्स का आइडिया है या जोमेटो का आइडिया है, जोमेटो स्विगी आइडिया है, और सो दे सेल. तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा हेफ्टी अमाउंट पे करते हैं. सो दीज एक्चुअली हु आर द एक्चुअल फाउंडर्स ऑफ स्टार्टअप्स, वो अपना आइडिया सेल ऑफ कर देते हैं, अपनी कंपनी सेल ऑफ कर देते हैं, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू सस्टेन इट ड्यू टू वेरियस रीजन्स. तो एक्विजिशन ड्रिवन एग्जिट्स बहुत ज़्यादा हैं. वी हैव टू प्रोटेक्ट इंडियन फाउंडर्स फ्रॉम दीज एक्विजिशन ड्रिवन एग्जिट्स. ठीक है, सो एग्जिट्स थ्रू एक्विजिशन दे हैव इंक्रीज्ड ओवर 500% इन इंडिया. अगर हम 2010 से 2020 तक की बात करें, 2010 to 2020,
2010 में there were only 49 acquisition driven exits, but in 2020 246. Obviously startups भी बढ़ गए हैं, but acquisition driven exits का जो percentage है, look at this has gone up by 500%. तो सबका अब यही होता है कि after operating for a few years, my company should be acquired and I should be exiting by taking a hefty amount. So इसके reasons है lack of access to capital, जो कि startups को बढ़ने नहीं देता है, and especially startups which are outside the 3 major clusters of Delhi, Bengaluru and Mumbai, वहाँ पे तो funding बिल्कुल भी available नहीं है. You have to either ask funding from your parents or from relatives. एक official route of funding, angel investors, venture capital funds, they are not available. Now then there are policy challenges government की side से. Obviously there is not always support. There are high taxes. There is red tapeism है. Bureaucrats के साथ आपके connections होने चाहिए if you want to survive in an environment in the long run. Legal battles हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है. सो स्टार्टअप्स इन इंडिया दे फेस रेगुलेटरी हर्डल्स, कॉम्प्लेक्स टैक्स स्ट्रक्चर्स हैं जो कि उनके एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन को और प्रॉफिट्स को भी बढ़ाते हैं, प्रॉफिट्स कम करते हैं, दे इंक्रीज द एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन. देन देयर इज कम्बरसम कंप्लायंस प्रोसेसेस, ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप, एम्बिगुअस रेगुलेशंस. तो बेसिकली स्टार्टअप्स के लिए बहुत सोल्यूशंस भी लाई है गवर्नमेंट. फॉर एग्जांपल दे कैन रजिस्टर नॉट एज अ कंपनी बट लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप. उनको टैक्स ब्रेक भी दिया जाता है 5 या 7 साल के लिए, फॉर 5 to 7 years. बट स्टिल जो कंप्लायंस स्ट्रक्चर इंडिया में दैट इज़ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड. तो काफ़ी जो स्टार्टअप्स हैं वो एक बार इंडिया में रजिस्टर होके देन दे आर गेटिंग रजिस्टर्ड अगेन इन लाइक फॉरेन लैंड्स जहाँ पे इतने ज़्यादा हर्डल्स नहीं है. ऑलराइट, सो नाउ मूविंग ऑन टू द वे फॉरवर्ड. व्हाई वी आर राइटिंग अ वे फॉरवर्ड? क्योंकि इतनी प्रॉब्लम्स लिखी हैं, सो वी शुड ऑल्सो हैव अ सोल्यूशन इफ वी रियली नो दिस टॉपिक. सो वे फॉरवर्ड वही है, टॉक अबाउट स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव दैट येस गवर्नमेंट इज टेकिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, गवर्नमेंट हैज़ पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट्स. इसकी वजह से क्या हुआ है, थोड़े वुमेन फाउंडर्स बड़े हैं, बट अगेन द फोकस नीड्स टू शिफ्ट ऑन सिटीज़ विच आर आउटसाइड क्लस्टर्स. टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज़ पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है. अवेलेबिलिटी ऑफ फंडिंग गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए. देयर शुड बी अ सेपरेट स्कीम और सेपरेट एरिया फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ फंडिंग टू स्टार्टअप्स. आप कुछ और स्कीम्स की बात कर सकते हैं जो कि छोटे बिजनेसेस को प्रमोट करती हैं. फॉर एग्जांपल स्टैंड अप इंडिया स्कीम, ठीक है. सो टॉक अबाउट स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव इन 2016. अप्रिशिएट द गवर्नमेंट दैट द गवर्नमेंट इज नॉट सिटिंग ओवर इट, गवर्नमेंट इज एक्चुअली पुटिंग एफर्ट्स. सो अंडर स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव आप अपने स्टार्टअप को DPIIT के साथ रजिस्टर करा सकते हैं फॉर टैक्स बेनिफिट्स, ईजियर कंप्लायंस, IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, फास्ट ट्रैकिंग के लिए कि अगर आपका कोई इनोवेटिव सोल्यूशन है, let's say AC से निकलने वाले emissions को can be converted into like let's say oxygen. So that is an innovative solution that we have. All right. So you want to get a patent for that. So उसके लिए fast IPRs government help करती है उसके लिए, intellectual property rights के लिए. Then just talk about that the focus has to be there from existing tier 1 cities to tier 2 and tier 3 cities क्योंकि वहीं से सबसे ज़्यादा jobs आ रही हैं. These are the startups. These are the cities which are providing most jobs, and especially not just those cities but semi-urban and rural areas also. Why should rural areas be left behind? Then encouraging women entrepreneurs. Again, government has to launch separate schemes for that. And it can be inferred that startups outside the main clusters उनको increased attention देने की ज़रूरत है. And then sum up by talking about Indian culture. That if someone in your neighborhood or in your friend circle or in your relatives is trying to launch a startup of his own, kindly support him or her. Kindly do not try to pull them down that you might fail or this might happen, that might go wrong. Yes, an intelligent idea can change millions of lives. जो आपको starting में मैंने आपको pictures दिखाई हैं of startups like Oyo, Zomato, they have changed millions of lives. They still continue to do that. Alright, so Indian culture थोड़ा सा risk taking नहीं है हमारा culture. We try to pull each other down. That also has to change. तो आप थोड़ा सा ही कि ऐसा viewpoint भी दे सकते हैं which not everyone else will be writing. If you have any personal views, then add them in the way forward and conclusion, and then you will be sorted. Alright, so I'm displaying the question again. Kindly use the comment section under this video for the next 48 hours to send your answers to us. This is an entirely free initiative. हम आपको free evaluation provide करते हैं. And do not cross the word limit while writing the answer. And in the next 48 hours, you will get your evaluation also. Comment section it is. I'll see you with another discussion on Friday 5 PM. तब तक आपके पास deadline है answer writing के लिए. If you have any feedback for us, our YouTube comment section is open for you. Kindly let us know in the comment section how you are, how much beneficial is Perspective 360 degree for you.
kindly subscribe and reach out to us at this phone number or this email ID, hello@edutap.co.in and 8146207241 for any further guidance that you require. Now I'll go back to the chat section to take any doubts that are occurring, and then we'll call it a day. Ananya, with practice, you will be able to realize that which things have to be defined. So, startup is basically a very common term, so you don't have to define it. अगर कोई बहुत ही टफ कॉन्सेप्ट आ रहा है तो आप उसकी डेफिनेशन से शुरू कर सकते हैं. और इफ द डेफिनेशन इज एक्सप्लिसिटली आस्क्ड, फॉर एग्जांपल, व्हाट इज अ स्टार्टअप? Yes, Mohit, that is, these are absolutely the right points. Satyan, don't use first person में मत लिखिएगा, but if there are specific, specific points you have to mention up as examples without using the word I, you can use that in your answer. When you post your answer with us, kindly, we'll check that out. तो आप वहाँ पर try कर सकते हैं to see how much marks you're getting for that. Yes, Aryaka, that is a very good observation that big players in the market, they acquire startups. Thank you, Veenu ma'am. Can revise 28% GST on online gaming. See, online gaming is something that, the government is not much in favor of. ठीक है? So, that would be controversial. हम कुछ भी controversial नहीं लिखेंगे. Can we mail the answer? No, Angel. No, Angel. Just post the answer in the comment section. अगर वो post नहीं हो पा रहा है, if you're incurring some problem, then you can mail us so that we can see what problem is coming. All right. Thank you. Thank you, Mohit. Thank you, Dinesh. So, I'm not getting any more doubts. So, I will call this a day. And I'll see you on Friday at 5 p.m. again. Thank you, all of you.